नॉट वेरी लॉन्ग। नहीं, ये स्टोरी लॉन्ग है, ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंट के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 3-4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो। हम तो पहली बार नहीं है। आप लोग भी चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले, आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था। आ रहा हूँ वही आ रहे, वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी, बोलिए। आप कर लो पहले उनसे। आप पहले बोलिए, सवाल कर पहले आप क्लियर कर दो। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शीजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शीजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने था, उसमें उन्होंने शीजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शीजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना। और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते तो हैं। आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए। नहीं, आप उनसे सबूत मांगिए प्लीज, आप सबूत लीजिए ना उनसे प्लीज। अभी एक जन सभी लोग की पसंद से चल रहे हैं, अभी आप अकेले हो रहे हैं, सब हमारी बात पूरी नहीं हुई है, उनको इग्नोर करा। अरे मैम अच्छा नहीं लगता है, मत जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। कैमरा आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा कैमरा पे, बैठ जाओ। आप बैठ जाइए। एक मिनट आपके सवाल देखो, आप लोग भी आपके सवाल का जवाब दे देते हैं, आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। बैठ के आपने बैठ ठीक। हाँ, शैलेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, शैलेंद्र जी को बोल रहे हैं। मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एक एपिसोड बताया, जहाँ पे तुनिशा ने मैंने आपको कुछ देर पहले 23rd का एक इंसिडेंट बताया, जहाँ पे तुनिशा पार्क के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वॉज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनिता शर्मा के तरफ से ही आया है।
सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का भाई एक आदमी सवाल पूछता है ना, तुम लोग बीच में मत बोलो ना, चलेंगे दो ना उसको। हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? सर उनकी मां ने हाँ सेट पे जाकर उन्होंने शीजान को समझाया था, शीजान को ये क्या कर रहा है, अगर कोई किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के मतलब क्यों कर रहा है? तो शीजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न्ड केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना बोलिए। वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिशा को 104 फीवर आया था, वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ बताओ। तुनिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी और उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूं, मैं चंडीगढ़ में हूं, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी। और आप प्लीज तुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार हैं उनको यही वो बलोनो गाड़ी है जिससे ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर में 20 साल की लड़की इस गाड़ी में फंसती है और उन लड़कों को नहीं पता चलता। जो स्टेटमेंट उनकी ओर से लगातार ये दिया जा रहा है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि वो लड़की इस गाड़ी में जो है वो फंसी हुई थी, कि स्कूटी का ये जो आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैन समाज की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। समेश शिखर जी जो जैन समाज का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, उसको जब केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट जो है वो हमें देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली पुलिस डिटेन करती हुई नजर आ रही है जैन समाज के लोगों को। तो अभी मैं GK2 में खड़ा हूं और आप मेरे राइट साइड में देख सकती हैं, ये वही अंतरा केयर सेंटर है जहां पर सुबह में आग लगी है। लगभग 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है। जो सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, उन्हीं दोनों फ्लोर में आग सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई। उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है और साथ ही 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यही वो बलोनो गाड़ी है जिससे ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर में 20 साल की लड़की इस गाड़ी में फंसती है और उन लड़कों को नहीं पता चलता। जो स्टेटमेंट उनकी ओर से लगातार ये दिया जा रहा है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि वो लड़की इस गाड़ी में जो है वो फंसी हुई थी, कि स्कूटी का ये जो आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। I'm coming. We are coming on that. Please hold. तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। तुनिशा का ये Guys, please. बोल रहे हैं। मैंने अभी बताया। प्लीज सुन लीजिए, सबको जवाब मिल जाएंगे। प्लीज 5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाइए। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। तुनिशा का प्लीज साइलेंस। जैन समाज की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। समेश शिखर जी जो जैन समाज का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, उसको जब केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने
पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। उसके बाद से ये प्रोटेस्ट जो है वो हमें देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली पुलिस डिटेन करती हुई नजर आ रही है जैन समाज के लोगों को। तो अभी मैं GK2 में खड़ा हूँ और आप मेरे राइट साइड में देख सकती हैं, ये वही अंतरा केयर सेंटर है जहां पर सुबह में आग लगी है। लगभग 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है। जो सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, उन्हीं दोनों फ्लोर में आग सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है और साथ ही 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यही वो बलोनो गाड़ी है जिससे ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर में 20 साल की लड़की इस गाड़ी में फंसती है और उन लड़कों को नहीं पता चलता। जो स्टेटमेंट उनकी ओर से लगातार ये दिया जा रहा है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि वो लड़की इस गाड़ी में जो है वो फंसी हुई थी, कि स्कूटी का ये जो आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैन समाज की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। समेत शिखर जी जो जैन समाज का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, उसको जब केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट जो है वो हमें देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली पुलिस डिटेन करती हुई नजर आ रही है जैन समाज के लोगों को। तो अभी मैं GK2 में खड़ा हूँ और आप मेरे राइट साइड में देख सकती हैं, ये वही अंतरा केयर सेंटर है जहां पर सुबह में आग लगी है। लगभग 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है। जो सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, उन्हीं दोनों फ्लोर में आग सब Real top headlines right now. Yet another lobby lie collapses. Top court upholds Modi government's 2016 demonetization move. Horrific hit and run case in national capital. 20-year-old has been mowed down and dragged for 4 kilometers. 5 arrested. Victim's family alleges foul play, but the police refutes. Family demands CBI investigation. Yet another cowardly attack in Jammu and Kashmir. The blast in Rajouri after the terror attack. Second stampede at Chandrababu Naidu's event in 5 days. Who will take the responsibility? Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah case in court today. Court to decide on survey timings. Viewers, we are live and breaking this Monday. I'm Shivangi Shukla. You're watching India's #1 news channel, Republic TV. Hours after terror attack in Rajouri, viewers claimed the lives of 4 civilians, injuring 6 others. An IED blast has been reported a while back. Reports suggest that 5 have been injured in the attack, viewers. So we are getting to know that an IED blast has been reported a while back, and we also can tell you that 5 people have been injured in the attack. This is coming in after the death toll in the Rajouri terror attack has increased. Many people are critically injured in the suspected targeted killing incident that took place in Rajouri. And according to the eyewitnesses, 2 armed terrorists opened fire at 3 houses separated at a distance at around 50 meters each in Rajouri. Now this happened on Sunday evening, leading to casualties and injuries. Let's go to Gursimran. Gursimran is joining us live. He's tracking every development. Now, Gursimran, after the terror attack, what we have learned is that an IED blast has been reported a short while back. Give us the details. See, yesterday, this same house right now where we are standing in front of
was attacked by the terrorist, and one person was killed here, Deepak Sharma. And today morning at around 9:40, a blast has taken place, which has taken one life, leaving one critical injured and 8 others injured. So a total of 9 injuries and 1 death has been reported. And if we count it from yesterday, 5 people have lost their life in the terror incidents in Rajouri, this area only Dangri, and 15 people are injured. Now the senior officials of the Indian Army as well as the Jammu and Kashmir police, they are also at the spot. They are trying to ascertain what has transpired, because what it seems that this is a newly infiltrated group of terror outfit Jaish-e-Mohammed that carried out this kind of act of terror. Agencies are trying to get hold of these terrorists or to neutralize them, but the way these terrorists have planned these attacks, it is a very deep-rooted conspiracy, because they were well aware that once there will be civilian casualties, then the people or the forces will gather at this place, and then they have put a timer ID here that blew at around 9:40 that has caused injuries to the civilians. However, there was no security force at that very place at the given time, but yes, that is a major tragedy. 1 life has been lost and 9 others are critically injured. And now the senior officials of the IG, CRPF, ADG, Jammu and Kashmir Police, Jammu Zone, and also the brigadier level officers of the Indian Army, they are camping here in the Dangri village, trying to ascertain what has transpired and what is the next strategy, because next strategy needs to be a step ahead of those terrorists. Hold on for a second. I'm being joined by Kavinder Gupta on the phone line. I'm being joined by Kavinder Gupta on the phone line, former Deputy CM of Jammu and Kashmir. Thank you for joining us. Now we are learning some details come out of this about this Rajouri attack. We also know that this looks like a case of targeted killing, because Aadhaar cards were checked before killing the victims, who were identified, many of them as Hindus. मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना मॉड्यूल चेंज किया है। पहले भी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की गई हैं, और अब राजौरी पुंछ जबकि घाटी में एक माहौल साजगार बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो अब राजौरी पुंछ का जो शांत इलाका था, इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सुरक्षा बलों पर विश्वास करना होगा, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद की कमर को तोड़ा है। ठीक है, उसी तरह से ये अपने यूनिफाइड जो कमांड है, जिसमें आर्मी या दूसरे सुरक्षा बल सभी इकट्ठे बैठ करके इसकी रणनीति बनाएंगे, और जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आगे से इस प्रकार की घटनाएं कोई ना हो, सरकार उसको भी सुनिश्चित कर रही है और 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो जानकारी मिली है कि आने वाले समय में सलाहुद्दीन जैसे लोग जो पाकिस्तान में बैठ करके मिलिटेंट्स गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वो है, उनको भी खत्म किया जाएगा, और उनके जो नियर एंड डियर है, जो उनके उन पर भी एक्शन किया जाएगा। आज भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, कोई रेडिकलाइजेशन जो है कहीं रुकी है ऐसा नहीं है, लेकिन समय समय पर एक कोशिश की जा रही है। तो विश्वास करना चाहिए सरकार पर और अपने सुरक्षा बलों पर, जो एक अपनी जान तक की परवाह न करते हुए इस प्रकार की घटनाओं को रोकते हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष में 159 मिलिटेंट्स का मारा जाना, बड़े लेवल पर हथियारों का जब्त होना, ये सब चीजें जारी हैं। जो आज घटना हुई है दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, और इस पर भी जल्द ही एक्शन होगा। हाँ जी, और the terror angle is coming out as well, Mr. Kavinder Gupta. The terror angle has to be investigated, and what we know is that there has been an IED blast after the terror attack, and now NIA is stepping in. So what will be the NIA looking at? What is the protocol that they're going to follow? All right. So we will be getting back to Kavinder Gupta, but I'll join right now by Nirmal Singh of the BJP is joining us. Thank you for joining us, Nirmal Singh. Now, what we are looking at right now, and I was asking this to Kavinder Gupta as well. Now, the NIA has stepped in. The NIA is going to go ahead and look at what happened. An IED blast has also been reported a while back, just after that terrible terror attack. It's very shocking that this incident has happened in Rajouri, which is comparatively a peaceful area, but it falls on the border.
So the Pakistani terrorists, they have succeeded in entering that area and do target killing. And the matter concern is that they identify the people by showing, by asking their Aadhaar cards and all that. And now the ED has been blasted there, and in which a child has been killed. So this is shocking, but this is desperate attempt by the Pakistani terrorists to give message to the world community, to the people at large, that they still exist. And as you have seen that 2-3 days back, these terrorists, there are 4 terrorists, Pakistani terrorists have been killed in Jammu. So they are targeting Jammu province as of now. But be sure that our security forces, army, they are taking them down, and they shall be brought to justice, and they shall be eliminated. That's there. This is a proxy war, and we are fighting it. The public is with the government, and all the security forces, whether it's army, security forces, and police, they are working in a very good coordination to eliminate this terrorism from the from Jammu and Kashmir. Right. Okay. Nirmal Singh, BJP leader, thank you so much for joining us here. And I just want to go back to our correspondent on ground who is getting us all the updates. Gursimran is there on ground right now. Gursimran, if you can hear me right now, and if you're there, you also got us some exclusive visuals. You got us exclusive visuals from what happened from the site of the terror attack. Take us through what we have learned so far. And we also know, Gursimran, that the eyewitnesses we have spoken to, they're narrating the ordeal where they're saying that some people came and they did targeted killings in 3 houses. And they are also adding a conspiracy is being hatched so that migration takes place from here. See, the senior officials of the Indian Army, they have visited the spot soon after the attack in which 4 civilians were killed, and then followed by an ID blast that has taken place. Now the officials of the Indian Army, the brigadier rank officers, they are leaving the spot, and possibly the strategy for the future has been charted out, because these terrorists seems to be the 2 of the deadliest ones who have come with their plan, a foolproof plan, that how they will give multiple terror attacks they will carry out multiple terror attacks in the region, first by carrying out the targeted killings, and then we have seen that how things has happened. अभी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे बाधित होती है सर्च, और सर्च अभी जारी है. आपको हम आफ्टरनून में कुछ जरूर बताएंगे. बस टेररिस्ट के बारे में कुछ ट्रेस मिल पाया है? अभी नहीं, अभी विल नॉट say anything. आफ्टरनून तक हम आपको कुछ बताएंगे. अटेम्प्ट्स ऑन है कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कैसे है ये सब नहीं, वो सब नहीं बताएंगे. अटेम्प्ट्स ऑन है टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज? ये बिल्कुल. कैन वी एक्सपेक्ट कि जल्द ही टेररिस्ट न्यूट्रलाइज? बहुत जल्दी. So a big statement coming from the Indian Army that very soon the perpetrators will be neutralized. A major statement that is coming from the senior official of the Indian Army, that the terrorists will be neutralized very soon by the Indian Army, and they have said that the searches have been launched in the area. I'll request Sarjeevan to keep showing you the cavalcade or the senior officers of the Indian Army, those who are heading towards the operation site. So, sir, can we say that operation is in advanced stage? Yeah, it is in stage, and they'll be very soon. We'll get some good results. It's on. Sir, any more IDs? Actually, there were some. No, it's wrong to ask this question. Let the operation continue. Okay, thank you, sir. So the senior officials of the Indian Army saying that very soon the terrorists will be neutralized, and they will be avenging the killings of the civilians. Yes. Right, okay, all right. Gursimran is getting us the top updates right now. Gursimran is right at the blast site as well. Very important point being made that right now the efforts are on to neutralize the terrorists. Thank you, Gursimran, and keep us ahead on the story as we track what really happened there in Rajouri, where the death toll has climbed to 5.
shocking incident coming to light, this time from Guntur, where we see 3 people lost their life and several others were injured after a stampede-like situation was occurred during the TDP chief Chandrababu Naidu's program here in Guntur, where he was the chief guest, and also this was as a part of the Sankranti celebrations, where the foundation along with the TDP leaders were giving gifts to the people. And now we also see that the loss of life has definitely brought a shocker, because we also see that this is the very ground where thousands of people came together to take part in the very public meeting where TDP chief Chandrababu Naidu was the chief guest. And also at the same time, now this is the place where we see how stampede-like situation was reported on Sunday night and also at the same time, as you can see, this is the very token which was being given by the TDP leader, TDP chief Chandrababu Naidu, and also for this people had come in large numbers, but then the situation turned worse. The public meeting turned into a tragedy where 3 people lost their life and several others were injured. And also at the same time, now the blame game between the YSRCP, the ruling government, and the TDP has begun, where YSRCP says that despite a similar incident which was reported in Nellore on 28th of December, we still see the TDP chief Chandrababu Naidu holding such large number of public meetings, whereas the TDP has been blaming it on the police and on the ruling government, saying that there is no law and order situation in the state of the Andhra Pradesh. And also at the same time, we have been seeing that TDP chief Chandrababu Naidu has announced an financial aid of 5 lakh rupees to the people who lost their life, and also Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy has announced an ex gratia of rupees 2 lakh and 50,000 rupees for the injured in this very incident. Viewers, getting some breaking updates coming in. The NIA will now question more people in connection with the investigation against the Popular Front. An inspection was conducted in 56 places in the state last day. Further questioning is based on the documents and evidence obtained from the raid. 3 people, it is learned, were taken into custody and then released yesterday. Sources say it has been decided to re-interrogate some of them. Even after arresting top leaders and banning the organization, the NIA is probing efforts to revive the movement. The NIA will also file application in the court to take custody of the Kochi lawyer Mohammed Mubarak, who was arrested during the raid. Let's go straight across to Ashwin, who's joining us live as well. Ashwin, now we know more PFI leaders are going to be questioned now in connection with the investigation against the Popular Front. Take us through the latest details we're learning. Well, what the National Investigation Agency has learned is that the second rung of leadership within the now banned Popular Front of India is trying to revive the movement of the activities through various means. And to contain that particular angle, the NIA had swooped into Kerala, the nerve center of the Popular Front, also the grey matter of the Popular Front of India. And 56 locations were raided. And as part of that, there was an arrest that was confirmed of that of Mohammed Mubarak. Remember, Mubarak is somebody who was a practicing lawyer in the Kerala High Court. Now, he is known to be amongst one of the trainers of the Popular Front of India, who has imparting martial arts training, and some sharp weapons were also seized from him. Apart from Mubarak, it is learned that 3 people from Thiruvananthapuram was also taken into custody, and they were interrogated and then sent back. But now, based on the new evidences that that NIA has got forward, it is highly likely that they will be called back again for questioning for the second round. Also, with regard to Mubarak, the NIA wants to have a custodial interrogation, and for that same, tomorrow it is learnt that in the NIA special court in Kochi, they will be applying for custodial interrogation of Mubarak as well. So NIA is going on with this investigation. More details are followed. Back to you. Right. Well, thank you so much for joining us with all the details right now. So we are learning that there's a NIA crackdown on the banned PFIs continuing. In fact, the NIA is trying to understand what is really happening there.
How is terror funding happening, and what kind of activities which have led to a lot of issues when it comes to community, when it comes to peace? Where is that coming from? Who is funding the terror outfits? Well, these are many questions which will be asked. Let's go ahead to the other story we're tracking right now. And this is the big news coming in. Supreme Court upheld the center's decision to demonetize the 500, 1,000 currency notes. Now remember that saying that there was no legal fault in the government's decision. A 5-judge bench of the Apex Court led by Justice S.A. Nazir upheld the center's move and said that there was consultation between the center and the RBI for a period of 6 months. We hold that there was a reasonable nexus to bring such a measure, and we hold that demonetization was not hit by the doctrine of proportionality. So we are seeing that this was a big win for the center coming in, where we saw Supreme Court which went ahead and it upheld the center's decision to demonetize the 500 and 1,000 currency notes. Let's go ahead and hear out the reactions coming in. जो सरकार की तरफ से इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, बड़े सोच समझ कर उठाए जाते हैं। उसके पीछे बहुत से कारण रहते हैं। ब्लैक मनी का जो बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा जो नकली नोट छप करके पाकिस्तान की तरफ से आते थे, इस पर कंट्रोल करना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, और कुछ लोग बिना किसी कारण से इस प्रकार की बातें करते हैं और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका सहारा लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा अच्छा कदम है। Well, this is a decision of the highest court, and I think constitutionally speaking, legally speaking, it puts the lid on the subject. The judgment is important for different reasons. It had political implications, and I think it has constitutional implications. The petitions raised substantial questions of law. The court has now decided it will not be possible for me or for anyone else to comment on the exact points of the judgment without reading the full judgment. But whatever is in the public domain, it is clear that the government's policy to demonetize has received the imprimatur of the highest court and has been legitimized and accepted constitutionally. But Supreme Court also said that the decision being executive economic policy and cannot be reversed. That, of course, is the settled law that courts do not normally interfere with government's economic policy decisions. This is settled law, and therefore they have followed that principle. Yet the final validity of the judgment will be tested in time. There will be many articles which will come about the judgment in due course, but for the moment the matter rests there. All right, viewers, so this is a big win for the centre, and viewers, we can tell you that the 5-judge bench of the Apex Court upheld the centre's move and said that there was consultation between the centre and RBI for 6 months. And also the court said in the notification dated November 8, 2016, which announced a decision to scrap the high-value currency notes, cannot be said to be unreasonable. Let's go across to Piyush Mishra joining us live. Now, Piyush, a very good afternoon to you. Now, this is a big victory for the government. Just take us through, what really happened. Take our viewers through what really happened and the kind of arguments which were made in court. अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है इसमें। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अलग फैसला, उन्होंने ये भी कहा कि एनी वर्ड एक